Hello everyone. Am I audible to you? Please confirm if you can hear me. Maaz, can you confirm if you can hear me? Yes, I can hear you. All right. We'll wait for another couple of minutes only, and after that I'll start the session. Okay. I see there are people already waiting, so we won't be wasting much time. We'll be starting very soon. Okay, I believe the other people who are going to join can join later on, probably while I'm speaking and giving my introduction and a welcome speech. So, Assalamu alaikum everyone. On behalf of Abacus Consulting, I would like to thank each one of you for taking your valuable time out to attend our session today. If you have attended any of the two sessions, now you know me. I'm Imran Rahmani, Head of Sales at Abacus Consulting, LAS. So Abacus, as you may be aware, is one of the largest SAP partners in Pakistan. Abacus has been in the consulting business for more than 30 years. I know the people who have been attending our webinars. This might be a little repetitive for them, but for the people who are new into the webinar, I would just like to repeat just 2-3 minutes. So, although Abacus is one of the largest SAP partners, it's not just about SAP. We have 12 different practices, and SAP LAS is just one of them. So besides LAS, we are into digital transformation solutions, cloud and emerging technologies, human capital solutions, strategy and corporate finance, business process outsourcing, etc. In LAS, in Abacus LAS, we sell and implement SAP all-in-one, that is SAP S/4HANA. That's the latest version of SAP all-in-one. And besides that, now our focus is also tilting towards emerging cloud technologies like Ariba, the session that we are having today, SuccessFactors, SEC, which is SAP Analytical Cloud, Integrated Business Planning. The session is coming up on 7th. I'll repeat it again, etc. Basically, we are 2,500 plus people in our team. We have more than 10 offices in 5 countries: UAE, KSA, UK, US, and of course Pakistan, Islamabad, Lahore, and Karachi offices. We have customers in Middle East, Africa, Europe, and of course Pakistan, across various industries like DESCO, oil and gas, FMCG, pharmaceutical, education, etc. I would like to take an opportunity to inform you of our upcoming integrated business planning session covering sales and operation planning. The session is coming up on December 7th. It is going to be a very informative session. The registration link we will share with you all as well. If you follow Abacus Consulting on LinkedIn, you'll find the registration links for all our upcoming webinars over there. Then basically, the world that we are living in today, few people could have anticipated the impact that COVID-19 pandemic is having on us. We are settling into this new reality with majority of companies working from home now. In Pakistan as well, the next few days, we're not sure, we might be working from home full time again. So the transition to complete remote working left business leaders worried basically about the impact that this would have on their organizations. However, many have been less surprised
by how smooth the transition from office to remote has been. It actually has come as a surprise. The productivity at times have actually increased. Many of the employees that were completely reliant on the offices are now successfully working remotely and considering it as a part of their future plans as well now. People have offices have got new ideas, right? बड़े offices क्यों रखें? Why to have bigger offices? We can always cut down those costs. But everyone's thinking, how is this going to impact the future? What challenges will this pose to a department like, say, procurement? Today's webinar will be focused on SAP Ariba Lifecycle and Performance Management. SAP Ariba Lifecycle and Performance provides comprehensive tools to better manage your suppliers. It helps you reduce onboarding and qualification cycle time and scale compliance for your entire supplier base. The solution capabilities are designed to provide you with a single up-to-date supplier record, make it easy for suppliers to maintain their own information, let you manage suppliers based on specific parameters, and help you operate with speed and consistency in the entire procurement process. So coming back to today's Ariba session, I'd rather let Maaz speak about it. So I'd like to introduce Maaz Younus, consultant for SAP Ariba Sourcing, Supplier Lifecycle and Performance Management and Supplier Enablement. Maaz has been a part of SAP Ariba Sourcing implementation as United Energy Pakistan and Affinity. He's also been a part of SAP Ariba SLP implementation at UEP, United Energy Pakistan. Currently, Maaz is the only one with live SAP Ariba SLP implementation in Pakistan and also holds SAP certification in this domain. He's also responsible for supply enablement strategies addressing change management. I once again thank all of you for taking time out to attend this session, hoping that it will be a productive use of your valuable time. Over to you, Maaz. You can take over from here, please. Thank you, sir, for the introduction. Am I audible to you? Yes, Maaz. Okay. Yes, Maaz, Hello, you're audible. everyone. Please go ahead. Thank you. Hello, everyone. Assalamu alaikum, and a good evening to everyone. My name is Maaz Younus, and I will be the speaker of today's session. As you all know, our agenda for today's webinar is managing supplier with SAP Ariba SLP. I will try to keep this session interactive and also informative so that you could take something out of your valuable time. So without wasting time, let's start with the introduction and today's agenda. Our agenda will be comprised of introduction, in which in introduction we will discuss business challenges, overview of Ariba supplier lifecycle and performance management, and why Ariba SLP, followed by supplier management process map, business collaborations on Ariba SLP, the most interesting part, system walkthrough, solution capabilities, our customer references, Abacus success stories, and then we will move on to your question answer session. One thing to mention here about the question answers, please post your questions in the question box on your right side, and I will be answering these questions at the end of the webinar. So let's start with introduction and the business challenges. What are the business challenges when there is no supplier management system in an organization? So let's see. So first and foremost, the way organizations are get engaged with the suppliers and manage their supplier across organization, there is a lack of control and governance in managing and in engaging with the supplier. Also, the supplier onboarding process is unstructured and inconsistent, due to which the supplier might get easily into the system and can cause a high risk due to the non-compliant process flow. Then there is also
there is an identification and qualification of the supplier which is left out when there is no supplier management application in your organization. So for example, let's consider the COVID-19 situation. So for example, if you want to make sure that supplier have an NOC from the government, and supplier can carry on the production in Pakistan, for example. So the factory should have the NOC from the government to carry on the production. So in order to make sure that the production of the supplier will not be interrupted by the government, you can ask for the better qualification in which you can mention the COVID-19 SOPs compliance attachment, or you can ask for any other thing. So this is also the one of the main reason uh, which creates the cause of supplier management in any organization. And lastly, usually in an organization, the supplier performances are evaluated on the base of, for example, if any incident occurs, then there is a performance evaluation rather than it should be on the preemptive or proactively basis. The supplier performance evaluation should be proactively evaluated rather than after an incident or manual performance evaluation. So let's see how procurement team, how the stakeholders in the procurement cycle have the problems during their day-to-day life. So, for example, let's consider procurement buyer. Procurement buyer, while creating an RFP, they always search for suppliers in a big in a pool of big supplier database. And if the procurement buyer is provided with such functionality in which he or she can assign a favorite badge on the supplier or can assign a preferred suppliers to some of the suppliers, it would be easy for any procurement buyer while creating an RFP that that he or she could easily include those favorite or preferred suppliers for a particular category or services. Then the procurement head, the one main problem for the procurement head which comes as a problem to the procurement head is that procurement as head is unable to see the whole picture of the procurement cycle and as well as supplier management. So disjointed systems means you don't have the right insights when you need to make important decisions. So it is very important to have the integrated systems to make the important decisions at the right time. Then there is a technical user department. There is a big problem while evaluating or qualifying any supplier by the technical user department. That sourcing needs different qualifying questionnaires for different category and for different region. Using the same qualification questions doesn't make sense. So qualifying suppliers in an intelligent and consistent way is the most important thing for in the procurement cycle. Next up, the finance and legal department. The foremost point for finance and legal is that the supplier's data can easily be updated by the supplier, and it should be in one place and and the supplier should provide up to date data rather providing different data to different buying organization. Also the supplier manager has have the fragmented information which makes it impossible to manage supplier performance and reduce risk. So it is very important for supplier management to have a whole picture of supplier information at one place to evaluate the supplier performance. So these were the problems, and let's move to our next point, that is overview of how Ariba SLP can help you in addressing those challenges. So here is a video, and I hope the video is audible. Please let me know if a video is not audible to you.
Yes, boss, I think so. The video is not audible yet. Is it audible now? No, Maz, I can't hear it. Oh, okay. If you could just So, open the video. okay, so let me conclude what is addressed in this video. So this video addresses that how the suppliers are disparated in the company, and there is a lot of time consumed while selecting and while onboarding the suppliers. And how Ariba SLP simplifies this onboarding process is by making by providing features simple and very user interactive, so that the supplier onboarding process uh, can be used easily for onboarding suppliers. So let's move to our next slide, in which we will be sharing the three main points from this video. The first point, which makes any supplier management solution more important, is that it is digital and integrated. SAP Ariba SLP manage, automates, integrated all related supplier managed activities. You can carry out supplier qualification, you can carry out supplier onboarding, and you can also record master data, in which you can have critical informations like bank account or quality information or certificate. You can also request suppliers for their certificates, and you can also monitor the certificates expiries as well. Also, you can apply global segmentation, and also you can improve. Also, you can receive inputs from your internal internal stakeholders for the better collaboration. Second point from the video was to improve the operational efficiency. How you can improve the operational efficiency. Supplier SLV provides the ownership to the supplier for keeping their data up to date. The suppliers keep their data such as certificates, form, documentations, etc. by themselves, and the suppliers updates the information for all the buying organizations they are dealing with. So they don't have to go to different applications for maintaining their information at different places. There is one place in which they have to keep one information, and that is visible to all the buying organizations they are dealing with. So it is very beneficial for the supplier and for the buying organization that the ownership of the data is much more transferred to the supplier side. You can also establish an internal collaboration with your R&D team, quality team, or finance team to get the better out of supplier side. Third and the foremost, if you are using if you are using any ERP in your organization, or you are using any Ariba application that could be integrated, which could easily be integrated with your existing applications, which saves time and which brings a one picture of the supplier information, which is the source of truth. It helps you in making the decisions, performance decision, and also you can evaluate the risk of the supplier. Now, why SLP? Why SAP Ariba SLP stands among all of its competitors? Let's focus on some figures. So Ariba Network, which is the application for the suppliers, in which suppliers logins and participate in an RFP or in a qualification or in registration or post their any information. The platform they use is called Ariba Network. So Ariba Network is a difference among all its competitors. Ariba Network is used by 189 countries, having 4.03 million suppliers. Every 5 seconds, a new supplier joins this platform, and there is a 2.81 trillion transactions in annually.
So Ariba network makes Ariba SLP stand out application among its competitors for managing your suppliers. Now let's deep dive into the supplier management process. What is supplier management process while using SAP Ariba SLP? So starting from, let me explain, give an overview of this process flow. On your left side, you can see supplier actions where you can see a cloud icon, which represents a cloud application which will be used by suppliers, and it's called Ariba network. Secondly, below that, you can see the actions that buyer have to perform. And, and below that, there are personas, user roles. And below that, you can see how your ERP will play its role while using SAP Ariba SLP. So starting from, first of all, there are two processes of inducting a supplier initially. One is the internal buyer from your organization can create a request, or supplier can directly visit your website and can request from there as well. So once the supplier requests, it goes through whether the supplier or the buyer request for the supplier creation, it goes through an supplier manager, as you can see here. After that, once the supplier request is approved, now the supplier will be sent the registration questionnaire, in which he will be asked for the banking details, taxation details, and legal details as well. Once supplier enters the registration questionnaire, whether he the first time answers or later updates, it directly affects your ERP. First, for example, if supplier is first time registering with your buying organization, it will be created in your ERP once the registration is approved. And later, supplier can also update his or her information accordingly. Once the supplier is registered, उसके बाद वो अपनी क्वालिफिकेशंस, आप जो बाइंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्वालिफिकेशन क्रिएट कर सकती हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आप ऑफिस आइटम सप्लायर्स से डील कर रहे हैं तो आप उसको ऑफिस आइटम कैटेगरी के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, जो कि वन टाइम है. उसके बाद आपने जब भी आरएफपी क्रिएट करनी है, आपने कुछ भी क्रिएट करना है, तो आप अपने सिर्फ क्वालिफाइड सप्लायर्स को ही इन्वॉल्व करेंगे फॉर लो रिस्क. उसके बाद क्वालिफिकेशन असेसमेंट होती है और वो अप्रूव हो जाती है बाय योर सप्लायर मैनेजर. After that, modular questionnaire is a very good functionality for managing certificates of the supplier. Modular questionnaire is an on-demand feature. अगर आपको फॉर एग्जांपल किसी सप्लायर की सर्टिफिकेट्स को मैनेज करना है, तो आप उसको ऑन डिमांड मॉड्यूलर क्वेश्चनर सेंड कर देते हैं, इन विच वो अपनी जो है इंफॉर्मेशन एंटर करता है और उसकी एक्सपायरी डेट सिस्टम खुद ही मॉनिटर कर रहा होता है. जैसे उसकी एक्सपायरी डेट क्लोज होती है, तो बायर और सप्लायर दोनों को अलर्ट्स चले जाती हैं कि उनकी सर्टिफिकेट जो है वो एक्सपायर हो रही है. सप्लायर उसको अपडेट कर देते हैं और बायर के पास ये एज अ रिस्क आ जाता है कि आफ्टर 10 डेज फॉर एग्जांपल सप्लायर की सर्टिफिकेट जो है वो एक्सपायर हो रही है. तो दोनों के लिए बेनिफिशियल होता है इन दिस केस. सो उसके बाद जो होता है सेगमेंटेशन स्टेटस, विच इज अ प्रेफर्ड स्टेटस, और यू कैन असाइन अ लेबल टू द सप्लायर ऑर्गेनाइजेशन. फॉर एग्जांपल, आप एक सप्लायर को 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार की रेटिंग से आप उसको सेगमेंटाइज कर सकते हैं, या आप उसको प्रेफर्ड के लेबल से स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं, या आप उसको बिलो एवरेज अबव एवरेज के वट एवर योर सेगमेंटेशन इज, आप उसको जो है क्लासिफाई कर सकते हैं सप्लायर्स को, जो कि बहुत हेल्प करता है while परफॉर्मेंस evaluation and in participating in an RFP. फॉर एग्जांपल, आपकी हाई रिस्क RFP है, तो आप उसमें 5 स्टार सप्लायर्स को सिर्फ इन्वॉल्व करते हैं. So this was the whole process of supplier management. Now let's see how business collaborate while using Ariba SLP. So there are total 8 collaborations. First is supplier onboarding from the buyer side. Then from the supplier side, there is a supplier registration. Then again from the buyer side, there is a supplier qualification request. इसमें मैंने आपको बताया ऑफिस आइटम्स के लिए आप उसको क्वालिफाई करना चाहते हैं.
फिर सप्लायर जो है उसको रिस्पॉन्ड करता है, विच इज सप्लायर क्वालिफिकेशन रिस्पॉन्स। उसके बाद एक सर्वे रिक्वेस्ट क्रिएट करता है बायर फॉर परफॉर्मेंस एवेल्युएशन, और फिर सप्लायर जो है वो उसको रिस्पॉन्ड करता है, और फाइनली परफॉर्मेंस रिव्यू होता है फ्रॉम बायर एंड एज वेल एज फ्रॉम सप्लायर कि आगे का क्या हमारा एक्शन प्लान है, कि हमने क्या चीज़ इंप्रूव करनी है। तो ये टोटल 8 कोलैबोरेशंस हैं सप्लायर लाइफ साइकिल में। Now let's move on to system walkthrough. Uh, let me mention one thing before the system walkthrough. इसमें हम यूज केस लेकर एक चलेंगे। फॉर एग्जांपल हम एक कैटेगरी बायर को लेकर चलेंगे जिन्होंने एक अरीबा एसएलपी की सिस्टम को यूज करते हुए एक सप्लायर को क्रिएट करना है और इस सप्लायर को रजिस्टर और क्वालिफिकेशन करनी है उसकी। सो लेट्स मूव ऑन टू द सिस्टम। So can you see my screen? So this is Tom Hathan, which is a category buyer, and he wants to create a new supplier. It is very simple. He will log in to the Ariba SLP system, and from the right top side, he will click the create button. After that, he will create the supplier request. The system requires some basic information from the buyer to enter in order to create a supplier profile. So buyer will be buyer जो है वो यहाँ enter करेंगे basic information supplier की। Once जो information है buyer वो enter कर देते हैं supplier के बारे में, तो वो submit कर देते हैं। अच्छा, let me make this clear कि अभी supplier जो है उसने interact नहीं करा, अभी इंटरनल अप्रूवल हो रही है विद इन द बाइंग ऑर्गेनाइजेशन कि इस सप्लायर को इंडक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उसके बाद बायर जो है उसको सबमिट करते हैं, और जो उनकी कैटेगरी मैनेजर है मदिया तारिक, उसको अप्रूवल रिक्वेस्ट रिसीव होती है ऑन ईमेल, एंड जब वो उसको ईमेल को एक्सेस करते हैं तो उनके पास ये स्क्रीन आ जाती है जिसमें उनके जो सब ऑर्डिनेट थे टॉम हेतन, उन्होंने ये इंफॉर्मेशन एंटर की थी फॉर द सप्लायर। वंस वो ये जो मदिया तारिक है वो इस चीज को व्यू कर लेती हैं, वो फिर उसके अप्रूव कर सकती हैं, डिनाई कर सकती हैं, ये रिक्वेस्ट फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन कर सकती हैं फ्रॉम द सप्लायर साइड। सो लेट्स सपोज मदिया तारिक उसको अप्रूव करती हैं। जैसे ही अप्रूव होगा, इस मोमेंट पे आपका जो आपका सप्लायर प्रोफाइल है वो क्रिएट हो जाएगा आपके अरीबा एसएलपी सिस्टम के अंदर और आपके ईआरपी के अंदर। उसके बाद अब आप रजिस्ट्रेशन के लिए इनवाइट करेंगे सप्लायर को। ये आपकी पहली इंटरेक्शन होगी सप्लायर के साथ in order to get the details of legal details or taxation details. तो अब इस जो टॉम हेतन है जो हमारे कैटेगरी बायर थे जिन्होंने सबसे पहले ये प्रोसेस इनिशिएट करा था सप्लायर का, वही उसकी रजिस्ट्रेशन को जो है कैरी आउट करेंगे। सिंपली वो इस बटन को क्लिक कर देंगे इनवाइट, और जो हमारे सप्लायर है रॉबिन लुदलम, उसको एक नोटिफिकेशन आएगी ईमेल के थ्रू जिसमें वो ये देख सकेंगे कि जो बाइंग ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने उनको रजिस्ट्रेशन की रिक्वेस्ट भेजी है। जो बायर होंगे जैसे हमारे इस केस में लुदलैम है, वो या तो उनका ऑलरेडी अकाउंट होगा या वो एक अकाउंट क्रिएट करेंगे। इन एनी केस वो इस क्लिक हेयर के बटन को सिंपली क्लिक करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। फॉर एग्जांपल उनका अकाउंट नहीं है तो वो यहाँ सिंपली जैसे हम फेसबुक या लिंक्डइन का अकाउंट क्रिएट करते हैं वो यहाँ अपनी बेसिक सी इंफॉर्मेशन एंटर करेंगे और उसको सबमिट कर देंगे। Once वो submit करेंगे supplier, they can see the registration form which was sent by the buying organization. Supplier will enter the information, an accurate information in the registration form, and उसके बाद वो उसको submit कर देंगे पूरे form को। Once the registration form has been completed by the supplier, बाइंग ऑर्गेनाइजेशन से जो बायर थे जो कि टॉम हेतन थे, उनको एक नोटिफिकेशन आएगी कि सप्लायर ने अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट कर दिया। यहाँ सप्लायर का काम खत्म हो जाता है और वो लॉग आउट हो जाता है अपने सिस्टम से। नाउ बाइंग ऑर्गेनाइजेशन में एक एंटिटी है, लीगल एंड फाइनेंस एंटिटी है, वो उनके पास नोटिफिकेशन आएगा फॉर अप्रूवल।
उनके पास नोटिफिकेशन ईमेल के थ्रू आएगा, वो फिर उसको एक्सेस करेंगे और फिर वो सप्लायर की इंफॉर्मेशन को व्यू करेंगे सिस्टम में से जाकर। देखिए यहाँ नजर आ रही है इंफॉर्मेशन जो सप्लायर ने एंटर की थी। वंस वो इन इंफॉर्मेशन को व्यू करने के बाद अप्रूव कर देंगे या डिनाई कर सकते हैं या रिक्वेस्ट फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो अप्रूव करते हैं और अब आप देख सकते हैं कि एक सप्लायर जो है हमारे सिस्टम में रजिस्टर हो गया। आफ्टर दैट टॉम हेतन जो हमारे कैटेगरी बायर हैं, जो इनिशिएटर थे सप्लायर को इंडक्ट करने में, वो अब उसकी क्वालिफिकेशन को स्टार्ट करेंगे फॉर एग्जाम्पल ऑफिस आइटम्स के लिए। सो सिंपली इस क्वालिफिकेशन की टाइल पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट क्वालिफिकेशन, वो कैटेगरी मेंशन करेंगे कि वो किस कैटेगरी के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं सप्लायर को और किस रीजन के लिए कर रहे हैं, और नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही वो नेक्स्ट करेंगे यहाँ उनसे कंफर्मेशन ली जाएगी और सेंड क्वालिफिकेशन। सिमिलरली सप्लायर के पास जैसे ही रजिस्ट्रेशन का क्वेश्चन सेंड रिसीव हुआ था, इसी तरीके से उनके पास क्वालिफिकेशन का क्वेश्चन रिसीव हो रहा होगा। उसको फिल आउट करने के बाद अगेन बाइंग ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉम हेतन थे, जो इस पूरे प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट ओनर थे, इनको नोटिफिकेशन आएगी कि सप्लायर ने अपनी क्वालिफिकेशन के रिस्पॉन्सेज सबमिट कर दिए। आफ्टर फिर उसके बाद टॉम हेतन जो है उसकी क्वालिफिकेशन को व्यू करेंगे कि क्या रिस्पॉन्सेज आए हमारे पास। So for example, there were 7 sections. One was operation, security, certification, supplier manuals, quality, supplier manual. These were the questions that were asked by the buying organization from the supplier, and supplier has responded uh, in form of yes and no. Yes and no. टॉम हेतन इसको देखने के बाद अब उसकी क्वालिटी असेसमेंट करेंगे। सो फॉर एग्जांपल टॉम हेतन देखते हैं कि जो रिस्पॉन्सेज सप्लायर ने सबमिट करे थे वो बिल्कुल सही है, तो वो उसको पास मार्क कर देंगे क्वालिटी असेसमेंट में। दूसरे भी ऑप्शंस होते हैं, आप फेल भी कर सकते हैं, पास भी कर सकते हैं, वट एवर योर चॉइस इज। और उन्होंने क्वेश्चंस के कुछ इंटरनल, जैसे ऑल द क्वालिटी सर्टिफिकेट्स आर वैलिडेटेड, उसका इंटरनल क्वेश्चन का ये आंसर करके वो मार्क कंप्लीट कर देंगे इस चीज को। यहाँ जो है क्वालिटी असेसमेंट टॉम हेतन जो बायर थे हमारे, उन्होंने असेसमेंट कर लिया। अब उनके जो कैटेगरी मैनेजर थे जो मधिया तारिक, उनके पास वो जाएगा अप्रूवल के लिए, और वंस मधिया तारिक उसको अप्रूव कर देंगी, ये सप्लायर ऑफिस आइटम्स के लिए क्वालिफाइड सप्लायर हो जाएगा। इस तरीके से आपका फॉर एग्जांपल अब आप आरएफपी क्रिएट करने चाहते हैं और आप चाहते हैं कि सिर्फ क्वालिफाइड सप्लायर्स जो हैं वो आपको आपके आरएफपी में पार्टिसिपेट कर सकें। सो ये जो सप्लायर थे हमारे, वो ऑटोमेटिकली आपके आरएफपी में ऐड हो जाएंगे, क्योंकि हमने उसको पहले ही ऑफिस आइटम्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। नाउ जैसे हमने पहले सेगमेंटेशन की बात करी कि किस तरीके से हम सप्लायर को कोई भी लेबल या फ्लैग असाइन कर सकते हैं, वेदर इट कुड बी 1 स्टार 2 स्टार, या कोई भी आप उस पर जो है लेबल लगाना चाहते हैं, जो कि आपको बाद में आप उसके रिस्क को देखने के लिए या आप उसकी परफॉर्मेंस को देखने के लिए आप कर सकते हैं। सो अब टॉम हेतन जो है कैटेगरी बायर, वो अब एक सेगमेंटेशन की तरफ जाएंगे और इस सप्लायर को वो एक स्टेटस असाइन करेंगे फॉर द कैटेगरी ऑफिस सप्लायर्स, और रीजन वही विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि इसी के लिए उन्होंने उसको क्वालिफाई करा था, तो उसी के लिए उसको वो सेगमेंटाइज भी करेंगे। और स्टेटस का ऑप्शन में से वो अपने प्रेफर्ड स्टेटस, जो भी उनको स्टेटस उसको असाइन करना है सप्लायर को फॉर दिस कैटेगरी, वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इट कुड बी मतलब आप उसको अप्रूव भी कर सकते हैं, प्रेफर्ड भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ जो ऑप्शन है आपके पास, ये कस्टमाइज भी हो सकते हैं, आप उसको 1 स्टार 2 स्टार भी रख सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल मैं उसको यहाँ प्रेफर्ड सेलेक्ट करता हूँ और मैं उसको सबमिट कर देता हूँ। वंस यहाँ ये सबमिट हो जाएगा, इसके बाद अब आप चाहें तो अप्रूवल फ्लो भी हो सकता है, इसको भी अप्रूवल हो सकता है, या डायरेक्टली आप चाहें तो इस पर प्रेफर्ड का स्टेटस भी असाइन हो सकता है इस सप्लायर के ऊपर। मूविंग ऑन, ये यहाँ हमारा जो प्रोसेस है लास्ट स्लाइड पे, फ्रॉम रिक्वेस्ट, रजिस्ट्रेशन, क्वालिफिकेशन और लास्टली सेगमेंटेशन, यहाँ हमारा प्रोसेस ये कंप्लीट हो जाता है अरीबा एसएलपी में। और ये जो है अब आपको एक फंक्शनैलिटीज है कि अरीबा एसएलपी के और क्या वैल्यू एडिशंस हैं। सो आपके पास सिंपल
सिंपल आपके पास फीचर्स हैं जिसमें आप सर्च कर सकते हैं अपने सप्लायर्स को। फ्रॉम द लेफ्ट साइड यू कैन सेलेक्ट द फिल्टर्स, और कोई भी आप फिल्टर्स उस पर असाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। फिल्टर्स कैन बी कस्टमाइज एज वेल। आप फॉर एग्जांपल यहाँ कोई फिल्टर लगाना चाहते हैं कि वो कंपनीज को सर्च रिजल्ट्स में दिखाएं जो कि एसओपी कंप्लाइंट है, या आप चाहते हैं कि जो ब्लैक लिस्टेड नहीं है, या कौन सी वो कंपनीज हैं जो ब्लैक लिस्टेड है और मेरे सप्लायर डेटाबेस में है, तो आप वो यहाँ से सारी जो है कस्टमाइजेशंस कर सकते हैं। आफ्टर दैट फॉर एग्जांपल यहाँ मैं लगाता हूँ क्वालिफाइड सप्लायर्स। मैं देखना चाहता हूँ मेरी कंपनी में कौन से क्वालिफाइड सप्लायर्स हैं फॉर प्रोफेशनल इंजीनियरिंग सर्विस कैटेगरीज, और तो मैं देखता हूँ ये मेरे पास ये रिजल्ट्स आए हैं जो मेरे पास क्वालिफाइड सप्लायर्स हैं फॉर दिस कैटेगरी। सो इस तरीके से आप जो है इसको फिल्टर कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप कोई कस्टम फिल्टर्स लगाना चाहते हैं, ऐड फिल्टर्स करना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। सो ये एक ओवरव्यू था कि किस तरीके से अरीबा एसएलपी सिस्टम आपको आपकी चीज़ों को सिंप्लीफाई करता है, किस तरीके से आपको वैल्यू एडिशंस प्रोवाइड करता है इन योर सप्लायर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू, अगर इसमें से आपको कोई भी क्वेश्चंस हो प्लीज मेंशन इन द क्वेश्चन बॉक्स। एंड नाउ वी आर मूविंग बैक टू द प्रेजेंटेशन। नाउ लेट्स डिस्कस सॉल्यूशन कैपेबिलिटीज इन मोर डिटेल। जिस तरीके से मैंने आपको सिस्टम में दिखाया है कि आपके पास एक सिंगल लोकेशन है टू मैनेज एंड ट्रैक ऑल स्टेप्स ऑफ द सप्लायर मैनेजमेंट प्रोसेस। आप फिल्टर्स लगा सकते हैं बेस्ड ऑन द कैटेगरी, रीजन, स्टेटस और कस्टमाइज्ड फिल्टर्स। देन देयर इज अ सप्लायर रिक्वेस्ट एंड सेल्फ रजिस्ट्रेशन। जैसे मैंने आपको बताया, बाय आप खुद चाहते हैं कि आप अपने सिस्टम में बार बार रिक्वेस्ट क्रिएट ना करें सप्लायर्स की, तो आप अपने वेबसाइट पे सिंपली एक फॉर्म, एक लिंक अटैच कर सकते हैं जो कि वो खुद रिक्वेस्ट करेंगे। आप जैसे ही वो सप्लायर वो वेबसाइट के थ्रू वो फॉर्म को फिल आउट करेंगे, आपके अरीबा एसएलपी में वो लैंड कर जाएगी रिक्वेस्ट, और वो एक अप्रूवल फ्लो से गुजरेगी। तो ये इसका बहुत ही बेनिफिशियल फीचर है जो आप उसको यूज कर सकते हैं कि रादर मेकिंग रिक्वेस्ट इंटरनली बार बार हर सप्लायर के लिए, अलग अलग सप्लायर्स के लिए, आप सप्लायर्स को भी ये दे सकते हैं कि कोई भी सप्लायर्स आकर जो है वो रिक्वेस्ट कर सकता है फॉर बिकमिंग द सप्लायर फॉर योर बाइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक बहुत जबरदस्त फीचर है इसमें। उसके बाद सिस्टम प्रोसेस फ्लो, आप जिस तरीके से प्रोसेस फ्लो को आप कस्टमाइज करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। वेदर देर आर सर्टेन सेट ऑफ अप्रूवर्स डालना चाहते हैं आप, इन सीरियल डालना चाहते हैं या पैरेलल, जिस तरीके से भी आप इसको करना चाहते हैं, आपके पास एक बेहतरीन कस्टमाइजेशन है सिस्टम के थ्रू। देन रजिस्ट्रेशन एंड ऑन बोर्डिंग जैसे हमने करी कि आप उसको कंप्लायंस इन्फोर्समेंट कर सकते हैं जिस तरीके से आप चाहें। वर्क फ्लोज को आप कस्टमाइज कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं सप्लायर की इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लाइक सर्टिफिकेट्स और उनकी एक्सपायरेशन डेट्स। और उसके बाद जब आप सप्लायर को क्रिएट कर रहे होते हैं तो सिस्टम के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त इंटेलिजेंट सिस्टम है जो ये अलाउ करता है कि आप सप्लायर को जब आप क्रिएट करते हैं तो वो आपको पोटेंशियल डुप्लीकेट का एक पॉपअप देता है, जिसमें आप देख सकते हैं ये वाले स्क्रीनशॉट में जो बिलो द अपर स्क्रीनशॉट के मैच स्कोर आ रहा है। सो फॉर एग्जांपल इन जो बाइंग ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने एक सप्लायर क्रिएट करा बेंटली वर्ल्ड पैकेजिंग के नाम से, तो उसका जो सिस्टम ने उसको इंटेलिजेंटली एक पोटेंशियल डुप्लीकेट दिया, उसका मैच स्कोर दिया 51.11। इसका मतलब ये हुआ कि ये वीक पोटेंशियल डुप्लीकेट है, आप उसको इग्नोर कर देंगे और आप इस सप्लायर की रिक्वेस्ट को प्रोसीड करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर सिस्टम आपको देता है 70% अबव देता है मैचिंग स्कोर, तो इसका मतलब कि मोस्ट प्रोबेबली ये सप्लायर आपके सिस्टम में ऑलरेडी बना हुआ है, या तो किसी और नाम से बना हुआ है, या किसी और एड्रेस के नाम से बना हुआ है, या उसकी कोई और टैक्सेशन आईडी है, कुछ भी है। तो ये एक बड़ा बेहतरीन फीचर है कि जिससे आप अवॉइड कर सकते हैं डुप्लीकेट्स को, जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन में एक बड़ा स्टैंडिंग मैटर होता है। और ना सिर्फ ये जो डुप्लीकेशन का पॉपअप है ये सिर्फ इनिशिएटर को आ रहा होगा, बल्कि उसके जितने भी अप्रूवर्स हैं, वेदर द सप्लायर मैनेजर और जो भी उनके सीनियर्स हैं, उनको सबको ये पोटेंशियल डुप्लीकेट का जो एक पॉपअप है वो नजर आ रहा होगा। मूविंग ऑन,
Supplier profile. This screen is called Supplier 360, जिसमें आप supplier की तमाम informations from request to registration, qualification, segmentation, certifications, everything, ERP profile, आप सिर्फ from this screen आप उसको access कर सकते हैं. आपकी एक्टिविटीज आ रही होती हैं कि सप्लायर का जो है क्या स्टेटस है, सप्लायर की रजिस्ट्रेशन कहाँ तक पहुंची है. सो ये एक सप्लायर 360 स्क्रीन जो है वो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रैकिंग ऑल सप्लायर रिलेशनशिप एक्टिविटीज. उसके बाद जैसे हमने सिस्टम वॉक थ्रू में डिस्कस करा कि क्वालिफिकेशंस एंड डिस्क्वालिफिकेशंस फीचर्स हैं. आप जिस तरीके से क्वालिफाई करते हैं सप्लायर को, जैसे हमने सिस्टम वॉक थ्रू में देखा, इसी तरीके से आप उसको डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपने ऑफिस आइटम्स के लिए क्वालिफाई करा एक सप्लायर को और आप चाहते हैं, आपने ये चीज ऑब्जर्व करी या आपने परफॉर्मेंस एवेल्युएशन के दौरान आपने ये चीज देखी कि सप्लायर जो है वो वायलेशंस कर रहा है किसी भी चीज की, तो आप उसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं फॉर टेम्परेरी बेसिस एज वेल और फॉर लॉन्गर पीरियड एज वेल. और एडिशनल फीचर ये है कि आप उसको ऑन होल्ड भी कर सकते हैं, कि ना आप उसको क्वालिफाई रखना चाहते हैं ना आप उसको डिस्क्वालीफाई करना चाहते हैं, आप उसको ऑन होल्ड भी कर सकते हैं. आफ्टर दैट सप्लायर सेगमेंटेशन, आप उसको कोई भी लेबल असाइन कर सकते हैं, वेदर इट कुड बी प्रेफर्ड और स्टार रेटिंग्स और एनी अदर रेटिंग मैकेनिज्म जो आपके बिजनेस को सपोर्ट करे. उसके बाद हमारे मॉड्यूलर क्वेश्चनर्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि अब आप देख सकते हैं जैसे ये स्क्रीनशॉट्स में जो एक सर्टिफिकेशन है विच इज नोन एज वेबनिक सर्टिफिकेशन, वो सप्लायर की एक्सपायर्ड है, तो वो रेड मार्किंग से आ रही है बाइंग ऑर्गेनाइजेशन को भी और सप्लायर साइड को भी वो रेड से नजर आ रही होगी, ताकि वो उसको अपडेट कर सके और साथ ही साथ उसको अलर्ट्स भी मिल रही होंगी कि आपकी सर्टिफिकेशन एक्सपायर हो गई है, सो प्लीज अपडेट दैट इन्फॉर्मेशन. और बाइंग ऑर्गेनाइजेशन को ये अलर्ट आ रही होगी कि इस सप्लायर की ये सर्टिफिकेट जो है वो एक्सपायर हो गई है, ताकि कोई भी रिस्क को जो है वो इजीली एड्रेस कर सके और लो कर सके. After that, let's move on to our customer references जो Ariba को use कर रहे हैं throughout MENA region, Middle East region. There are big names in it, UEP, FNAT, Bell, Jazz, and these all companies are using SAP Ariba, and they're very satisfied with that. Now let's discuss our personal, which I mean Abacus success stories. And first of all, there is United Energy Pakistan. United Energy Pakistan opted for, which is also known as former BP, British Petroleum, opted for Ariba sourcing, and then in the next year they opted SAP Ariba SLP in 2020. So the Ariba sourcing implementation started in 2019, in which the main issues objectives were that their sourcing process was very complex and inconsistent and unstructured. We implemented Ariba sourcing at UEP in 2019, and we went live within 3 months. And after that, the resolution, what we achieved after the implementation was their sourcing process was very simplified, and they recently I came to know that they achieved 20% up to 20% savings in an auction, which was great to address the profitability of your organization, of any organization. After that, they opted for Ariba SLP. The issue was same, that the supplier onboarding process and the supplier qualification, performance evaluation was not there in UEP, so they opted for Ariba SLP, which address these all supplier onboarding processes, all supplier management activities, very in a very good way. After that, we let's hear from our consultants about Jazz implementation, how Jazz come to the conclusion that they need Ariba solution, and what were the challenges and what were the benefits they achieved after the implementation. So we have here SAP Ariba consultants from Abacus, which were there on Jazz project,
I would like to invite Murtaz Ali for a brief overview that what were the challenges that they have on the Jazz project and how they integrated Jazz with Oracle system. Over to you, Murtaz. Yes, thank you, Maaz, for the introduction. Hope everyone is with the good health. So Jazz or PMCL opted for SAP Ariba contracts to bring efficiency to their contracting cycles. So basically the process at Jazz is that every RFP needs to be associated with the contracts before the issuance of the PO. So the major problem related to that is that they were facing the longer contracting cycle, no standardization, lack of central repository, and less visibility on statuses of different contracts. These were the few problems that they were facing at that time. So luckily for these problems, we had the best solution in mind, which is SAP Ariba Contracts Management. So with the help of Abacus Consulting's experts, now 2,500 plus users of Jazz are using SAP Ariba. And with the help of SAP Ariba, they can now create contracts quickly and easily using pre-approved templates and legal clauses. They accelerated their supplier collaboration, and obviously with the supplier collaboration, they shortened their contracting cycle. They standardized and automated their full contracting process with the legally vetted documents. Last but not the least, with the e-signature capabilities of SAP Ariba contracts, they eliminated the time and expense of shipping and signing multiple contracts copy. SAP Ariba contracts comes with an integrated digital signing tool, and in COVID situation, this was a really value proposition for the Jazz. At Jazz, we not only implemented, as you know, that we not only implemented SAP Ariba contracts, but it was also the very first integration of SAP Ariba with the non-SAP ERP. So for that, I would like to ask Hamza to share the challenges he faced and how he solved those challenges while integrating SAP Ariba with Oracle NetSuite. Over to you, Hamza. Thank you so much, Murtaz. So, assalamu alaikum to all of you. As Maz have mentioned earlier, that this was the Jazz was the first SAP implementation and for contracts, and within Jazz, this was the first SAP implementation. So there were a couple of challenges that we faced. The first was that this environment was totally customized. Their ERP is so complex, and even the web services which integrate the external systems were customly built. So a second challenge that we were facing, that just sourcing and the contract process, these both process they run separately. So that was the major reason for delay in POs. So if we talk about if we take a nutshell of a bird eye view of the process in Jazz, so we can issue POs only when there is a full signing contract and supplier's quotation on RFP. So all this documentation processing was taking time, which leads to a slow in progress. So we integrated Oracle ERP sourcing module with Ariba contracts with the help of web services through a middleware. Because if we are integrating any Ariba solution with non-SAP ERP, we have to use web services or any kind of middleware, which is CPI. So as a result, we were able to run both processes, sourcing and contracts simultaneously. So if we talk about a little bit about the process that Murtaz have mentioned, that there were contract authors who engaged all the stakeholders into a collaborative environment. Then we have this document sign implemented over there, which helps in digitally signed documents. After that, it's published, and along its header fields, it will be reflected in the Oracle ERP. So once the RFP is finalized, they are okay to go for the POs anytime. So bottom line was that now contracts were finalizing before the RFPs. So now because of these advantages, Jazz is now leaning towards SAP and looking into different SAP solutions. So this was a major success story for Abacus and for Jazz also. Thank you, Murtaz. Thank you, Murtaz and Hamza, for sharing valuable implementation experience, which always is very important for any um, um, prospects.
Moving on, after Jazz, before Jazz, we also have Bell, in which they opted for Ariba sourcing. The same challenges were faced by Pell as well, and let me remind you that Pell was the first Ariba transformation in Pakistan. Um, Bell also faced the same issue that their sourcing process was not standardized, and there was a lot of automation that required. Also, the savings they were looking for with the help of SAP Ariba sourcing auction functionality, and which they achieve in the best possible way. They held several auctions in which they received a good responses from supplier, and also they address their profitability through it. After that, we had Affinity project, which is a software development or an IT based solution company. Um, they also were looking for a sourcing application which would help them in standardizing and in automation of their sourcing process, and also increase savings with the help of auction. And after the we almost implemented Affinity project in a very quick time, and then the resolutions which they achieve after the implementation were that their process of sourcing or creating an RFP was shortened to almost 10 minutes, which they were taking most probably a day for that, creating an RFP and going through an approval flows. So it helped them really well. Now, I would welcome your questions, and please, on the right side, there is a question options where you can post your questions. Um, I will, if there are any previous questions that were posted, I will try to answer all of those. Please, you are most welcome to uh, write your questions in the question box. So there is a question: how can we proceed this if supplier is not using SAP? The supplier does not need to have the SAP ERP. Simply, you have to send in a registration request to the supplier, and supplier will create an Ariba network cloud application account, just simply like a Facebook or a LinkedIn account, and then he can easily participate with your registration or your RFPs as well. So there is another question that is how we can add dynamic approval flows in the request stage or the registration. So the answer for that is there is an intelligent system functionality in which we dynamically creates approval flows according to the category. So for example, if there is an if you are inducting an IT supplier, for example, so so once you select the category for the supplier, which is information technology, after the approval, the system will automatically pick the category which is information technology, and will add all the related stakeholders from the IT department to the approval flow. So in this way, you can have the dynamic approval flows depending on your category. Whatever approval flow you want to add, it could be added. Also, you can add serial and in parallel approval flows. For example, you want two entities, finance and legal, in parallel to vet the document or to go through the document, or responses from the supplier. You can use that as well.
So there is another question, which is at which point SAP ERP is integrated with Ariba SLP. So at the time of registration, let me revise a little bit. When the first process is called a request part, in which you internally creates a request for a supplier, and then you send a registration request to the supplier. Once the registration request is approved by the buying organization, there at that time the supplier is created in your ERP system. Uh, any other questions, please? You can write it in the question box. So there is a question, what is the time period of SAP Ariba SLP implementation? It totally depends on the business processes, but usually it can be implemented in at max 4 months, which is a handsome time for implementing SAP Ariba SLP. It could be reduced to 2 to 3 months as well, but depending on at max, it can be it can take 4 months at least. So we are about to end this webinar. Please, if you have any questions, you are most welcome. We have 2 minutes to go, and then we will end this webinar. So we are taking the last question. So we have a question. We are taking the last question, which is when a supplier is sync in ERP after request is approved or after registration. So the supplier is sync after the registration is approved. As I have explained earlier, the first part is request, the second part is the registration. Once the registration is approved, the supplier is created in your Ariba SLP application as well, and is also synced in the ERP as well. And after that, if supplier updates the information of the registration part, it also sends updates to your Ariba SLP application as well, and as well as your ERP as well. So you can have the same information in different applications as well, which becomes a source of truth. So that's it from the webinar. Hope you had a valuable knowledge bits from our side. We welcome you to join further webinars in our series as well. Please, you can follow our LinkedIn account of Abacus Consulting, and we will keep you updated through email as well. I will be sharing this presentation through email. If you have any questions, you can contact Imran Rahmani, our sales lead, and also you can contact me or Javed Iqbal, practice area lead. So that's it from my side. I'm signing out. Allah Hafiz.